Okay. Hello, everybody. Welcome back to another session. Good evening, guys. So, in this session, we are going to talk about interface and encapsulation. Just let me check if I am live and everything is fine, and then we'll start this particular session. Okay. Just give me 1 second. Let's just check. So if you guys are new here and do not know what is happening, I just want to tell you that we are CodeBeyond channel. We are providing different courses and different domains knowledge, and here we have different educators who are providing different domains knowledge. You can already see that we have sessions on front end, we have sessions on back end, we have sessions on Python, SQL, CP, DSA. Everything is there in this particular channel, so you can go ahead and try it out. I have also come up with one of my particular playlist which was on front end programming. So if you have not seen that, please go ahead and watch it, because there I have explained about HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap framework. You can see how good it is and how you can actually become a front-end developer if you go through my playlist. This particular playlist is on complete Java tutorial, which I have recently opened up, and we have already completed 13 lessons on this. This is our 14th lesson, and we are going to understand about interface. If you have not seen my earlier sessions, please go ahead and watch it and then come back and do this session, because if you are very new to Java, you won't be able to understand if you directly watch this particular session, right? So please make sure that you have watched all other sessions as well. Perfect. So I think everything is fine here. Audio, video, everything is great. So let's just get started with this particular session. And if you do not know about me, then just let me introduce myself. So my name is Ritwik Raj, and I'm a corporate trainer. I've also worked as a research analyst and a subject matter expert in most of the tech companies. And I have 3+ years of teaching experience, and I've trained graduates and corporate employees from Edison and Capgemini. I've trained more than 30 students till now. It is increasing day by day. Subjects which I take is mostly into front-end development, back-end languages, database languages, and interview preparation. You can use my code RIT10 to get a free level sample test paper. If you do not know what is level, don't worry. In just 1 minute, I'm going to tell you about that. But if you do know about Relevel, you must be knowing that you have to give an actual test of Relevel to score and to get eligible for company hiring, right? So for that, you can use this sample paper to understand what all different kinds of questions will be asked in the actual test, correct? So this is what is all about myself and the coupon code. Let's get deep dive into the concept of Relevel. What is it, and why do you need to register there, what it will help you, what benefits it will provide, right? So let's get into that. Before that, I just want to tell you that I have already come up with tips and tricks on how to crack interviews. 2 sessions are already there in the channel. So if you have not seen that, please go ahead and watch it, because maybe you will be having an upcoming interview maybe next week or next to next week. So what you can do is you can go ahead and check out that 4-hour session. That is 2 session, 4 hours. So basically there you will get an idea of what all things you need to take care when you are preparing for an interview. Okay, coming about Relevel. So basically, the reason behind coming up with a product which is Relevel is basically that most of these students are from different degrees. They are from BSc or BCom, and they want to jump into IT industry. They have the skills, they have the talent, but still they are not being able to get qualified for the interview, or maybe their resumes are getting rejected. Why? Because their degree or their graduation is of different degree rather than engineering. Most of the engineering people also do not get opportunity to get hired because of their college. So maybe they are from tier 3 college, and most of the MNC companies want tier 1, tier 2. So this is also one of the reason why this particular thing happens. So these are some of the reasons why Relevel came into picture, and it is India's first test hiring platform by Unacademy, which is helping job seekers find their dream jobs on the basis of their skill and talent. So only on the basis of their skill and talent you'll be judged and you'll be given interviews. So now, what are the benefits of participating in the Relevel test? You can attempt this test for free. First of all, second of all, there's a 1,000 marks test in which you have to score above 700 marks, and if you are doing that, then you'll become eligible for that particular test, and we'll create a profile for you. We'll share it with all our 100+ companies, and those companies are having different opportunities, 1,000+ positions across business development, front development, and backend development. So you can go ahead and try that. Now, how to register yourself in Relevel? So you can see that there's a link given in the description. You can just click on it and it will take you to the Relevel website. Once you go there, you'll be able to see this particular website where you can click on this particular bar, and then you have to
put down the mobile number, get an OTP. You have to select the test of your choice. Maybe you are very good in front end, select that, book a slot when you want to give the level test. Slots are limited, so I suggest you to book it fast. Okay, now once you do that, you can use the promo code mentioned in the description, which is RIT10. You can put it here, you can click on apply, and you can click on create account. You have to fill in the details for the admit card, like full name, email ID, birth year, and current state, gender also. And once you do that, you can get this particular account page where sample paper will be there. If you're not using the coupon code, you won't be able to get the sample paper, so make sure that you are using that. Once you click on download sample paper, sample paper will get downloaded to you, and you can see what varieties of questions have been asked, and you can practice as well, so that you'll be well prepared for the actual Rebel test. So do not wait, go ahead and register for it. If you have already done it, then all the best for the exam. If you have not done it, please do it. If you are not ready for the exam, let's say that you are not skilled enough, you are thinking that many things will be asked there and I do not know about it, so you have to upskill yourself, right? What you can do is you can go ahead and check CodeBeyond channel. You can check out what all things are happening there, and check out basically what all related videos are there, like DSA, CP, backend, frontend, what all things are there. Check out that, and then you can go ahead and register for Relevel once you're ready. Correct? You can also join the Telegram channel. This channel link is also given in the description. You can click on that, and once you click on that, you'll be able to join the Telegram channel, where we'll be providing all the notifications and updates when a particular educator is coming live, with what particular time and with what particular topic. All these things will be shared in this particular Telegram channel. Also, you can subscribe to the CodeBeyond channel YouTube. Once you click on the notification bell, you will get alerts and notifications in your YouTube app as well, right? Also, what you can do is you can like and share, so that more and more number of people will get to know about this particular thing. Okay, so let's get started with today's topic, which is interface. I'll just wait for some time so that more and more number of students can join, and then we'll be able to start our session. Okay. Perfect. So I think now every person will join, because I've already pinged it in Telegram also. So I think now many of you will join. Fine. So let's get started with this session. Hi Dhanu. Hi Sagar. So after 31st Jan, all the content will be deleted. I don't think it will be deleted. I don't think we have done a lot of sessions here, and very helpful these sessions are. So I don't think it will be deleted. For sure it will not get deleted. It will get paused. Maybe sessions won't happen in this channel then, right? Maybe another channel, maybe something else will be happening. You will get an update about that. Don't worry. Just keep on focusing on this particular channel, news updates or community post or anything like that, so that you get an update where we will be coming or how it will be done, right? So where we can connect with you after 31st Jan. You can connect with me by Unacademy app, or what you can do is you can put a message in my LinkedIn profile. I cannot share the profile, but you can just find me in the LinkedIn and you can give me a connection, and I'll be able to, you can able to ping me. I'll be able to reply. That's how we can connect. But meanwhile, that's what news is, that this particular channel will get paused, not get deleted. Okay. So don't worry about that. Now, if you guys must be knowing that in the earlier session, we have understood about a lot of things related to OOPS concept, a lot of things, because last session was really very amazing, and we have understood about abstraction. We have understood about not abstraction. We are about to start abstraction. We were doing about inheritance. We were doing about one of the concept, which was polymorphism, right? And we also did this keyword. All of these things we have understood in the previous session, right? Constructor, and then how method overloading happens. All those things we have seen in the previous sessions. But now is the time when we are moving ahead to inheritance, because inheritance, when we understood that multiple inheritance cannot be achieved using classes in Java, right? And interview questions I have also told you in that.
But now how to solve that particular problem, right? Because multiple inheritance is achievable, correct? But how is it, right? So we can use interface to do that. But what is interface? We do not know, correct? So interface topic we will come up with later on. We will see how interface works and how it actually overcomes the problem of multiple inheritance in this particular session itself. But before that, I think on the day before yesterday's session, we were trying to understand what is super keyword, right? And we just ended the session because we were not having time. We already were in the 2 hour slot, and I was not planning to exceed that. So that's why I ended the session. If you remember, if you guys have seen my sessions, you must be knowing that, right? So right now we are here. We are learning super keyword now because this is the right time to learn it, because inheritance goes very, very perfectly with our super keyword. So let's try to do this. Super keyword is used in inheritance, always refer to its immediate as an object. If you're not understanding this particular definition, it's totally fine. I've always told you that do not go with the definitions which is written in the bookish language or it's written in any of the tutorial. Do not go with that. Try to make your own particular definition. So once we will do the practical of super keyword, you will be able to understand what I'm talking about, right? So let me just open the IntelliJ IDEA. You can see here, right? I'll also do one more thing. I will try to open my code also, so that will be very much visible to you. Just 1 second. Okay, perfect. I hope you can see the PPT again. Right. So have a look. There are three usage of super keyword. I'll tell you about super keyword in a very detailed manner in this particular session. So please try to understand that. Basically, super keyword is used to invoke the superclass variables or to invoke the superclass method or to invoke the superclass constructor. If you know that in inheritance, we have a parent and a child class, right? We know that because in inheritance, that's what is the concept. We have a parent class and we have a child class. The child class inherit all the properties from the parent. We have talked about upcasting, downcasting, object creation, how this upcasting and downcasting happens, why downcasting is not possible, and then some of the use cases of it and some of the examples also related to that. We have seen all of these in our previous session. So if you have any doubt related to inheritance, please go ahead and watch the sessions again, the earlier sessions again, right? But because here in this session, you have to be very strictly knowing about inheritance. If you do not know about inheritance, this particular session is a waste of time, correct? So go ahead and watch the previous session so that you know about inheritance. Here it is saying that we can invoke the superclass variables. That means if you use super keyword anywhere, if you use super keyword anywhere in your child class, you can directly go to the parent class. So suppose in my child class, I've just written one super keyword. So from that super keyword, it will directly take me to my super class. It will directly jump from my child class to parent class. Super class is nothing but parent class. Child class is nothing but subclass. I've already told you this many times in my previous sessions. So it will invoke the superclass variable. It can also invoke the superclass methods. It can also invoke the superclass constructor. Let's see one example of how it can do that, right? So let's try to see this particular example. We will do this particular example in our ID also, but right now let's just check it. So you can see here, we have a class superclass. We are having a basic parent class, basically a superclass, I equal to 20, and then display the normal function which you have written here, right? And then we have a child class in which we have subclass extend superclass. That means inheritance is shown here. And then we are writing int I equal to 100 and then displays the same function which we are doing here, right? And then it's written super.display. Can you see that? So let's understand what is happening here. So what I'm going to do is we are going to write this particular code in our ID and then we'll try to see this. So opening my ID and here I'm just going to paste this code. Also, let's just zoom it so that at least you can see the whole code. I think these are copied, so that's why it is not working.
Okay, fine. So this is our program. What we are going to do is, first of all, I'm just going to make it look much more precise. Right. So now have a look. Main method, always the execution, it starts from where? It starts from our main method. So let's have a look at what is happening in our main method. So as you can see here, what is happening, basically we have a main method. Subclass ka object ban raha hai, right? We are creating an object for subclass. So obj is the object of our subclass. What is happening again? I have explained nothing, Tanuj. Just started. I have not explained anything. This is the first program in which I'm just going to start something explaining, right? So you are at the correct time. No worries. So you can see here we have created one object of subclass, right? And then we are using obj.display, correct? So if this object is of pure object of child class, so where it will go? It will go to our child class, and in the child class it will see for display function, display method, right? So from here the JVM execution will go directly to here, right? Once it goes here, what is written? Super.display. Now we are using a super keyword, right? So what does it say? It says that it invokes the variable, method and constructor of super or parent class. That's what we have learned in the definition, correct? That it invokes the variable, method and constructor of your super class or the parent class, correct? So this particular super keyword is used with which particular method? Display method, correct? So if it is saying super.display, that means it is invoking the method of the parent. If I'll write super.I, it will only invoke the variable of superclass. If I'll write the constructor, it will only invoke the constructor. So it is not like that if you write only super keyword, it will invoke all three of them directly. No. Super dot any method name which is there in my parent, it's gonna invoke that directly. So from here, the cursor will directly go to this place. Directly it will jump from here to here, and it will print superclass display method first. So it's gonna print superclass display method first, and then it's gonna come back because we have a lot of codes written here as well, correct? So it's gonna come back and then it will print this as well. Okay, so let's run this. Let's try to see what is the output so that you get an idea. Okay, this is how it works, right? So you can see here what is happening. Superclass display method, which is written here, that means our super keyword is working. And then subclass display method, which is here getting printed. And then I value, we are writing I. So you can see what is the I value. Why is it printing 100? Please do not get confused. You must be remembering कि जब भी we have inheritance and we want to print I का value or we want to pass the variable I, it always take the parent का value, right? Because because variables cannot be overridden, values cannot get overridden, only methods get overridden, right? So if we have same methods, then methods will get overridden, but if we have same variables, method won't get overridden. So focus will only be in the parent variable. This I have told you in my previous session, correct? So that happens when you are printing the I value here, somewhere here. When you are printing the I value, when you want to fetch the value of I anywhere here, then it will fetch you the parent class ka variable value. But where am I printing I ka value? Here, right? That means in the same class. So it will take the local variable value. This is a local variable. This example also I have given you in the previous session, if you remember. So this is my local variable value. That's why it is printing 100 here. Okay. But have a look at this one. See what's written here. Here it was only written I. So it took the local value of subclass. That's what, right? Here it's written super.I. That means I'm saying that, hey, I have used super keyword with variable. So you need to go to the super class ka variable I and fetch that value and print it here. Okay. So super keyword is used with a method here and super keyword is used with the variable also here, right? So now it will print me 20. You can see here, it's printing me 20 here. Any doubts? Any doubts? See, this I was 100 because it's a local variable. That's why, okay?
and this one is super.i. So this will also fetch local variable, but its super keyword is written, na? So it will directly go to super class and it will fetch that value. Only just because super is written. If you are printing I value here down, anywhere here, it's gonna take the parent ka value, because I value is never, okay, let's do that. I cannot write it, right? I cannot write it. Cannot introduce a local variable here, right? Okay. I1 obj. Acha, okay. This will not work. No, that example was correct. The previous day example, which I think in my previous session I have told you how to do that. So in that one, it is taking this one, this particular thing. But I think the upcasting was done. That's why it is working like that. So right now, but we have already created the object of subclass, right? So it is taking 100 value. You just saw what I did, right? That was giving me 100 value because I've already created the object of pure object of subclass. That's why it is not working. In upcasting, it will work. So when you're upcasting means when you are creating a subclass object with the help of superclass. At that time, it will take the this I value, because variables cannot be overridden. I hope you guys have seen that example. Yeah, I think day before yesterday only I took it. So don't get confused in that. Let's come to the PPT and let's try to see some more examples. I hope super keyword use with method and variable you have understood. This is what is super keyword with method, and this is what is super keyword with variables. Okay, direct SOP I कर सकते ना. यहाँ पे you cannot do direct SOP. Let's try to see. I don't think you can. See, this is giving me an error. So you have to create a local variable in this particular area. That's what it is saying, right? You cannot print this directly here. Fine. Now let's have a look. So let's move to the next code. So here you can see super keyword is used as a reference for the superclass instance variable. Super keyword is used as a reference for the superclass instance variable. So what is the meaning of that? Superclass instance variable means superclass object variable, right? And it is used as a reference for the. So let's try to look in this particular example. You can see here we have static void main and colorful d equal to new colorful. Colorful is the subclass. So we've written that, and then d dot print color. So it's going to directly call this particular print color method. Yes or no, right? And then it's written system dot to print and color. So it prints color of colorful class, right? But when you do super dot color, it's gonna print the color of rainbow class, which is indigo. Very simple example is nothing but the use of variable with the super keyword, right? That's what we are doing here, nothing else. Have a look at this example. I hope you will be able to understand this. If not, then please do let me know. This is a normal example using variable. I think you will be able to get it because there's no such code here which actually is very unique. So let's try to run this, and you can see here first red will come and then indigo. So you can see that, right? Why red first? Because this is printing the local variable first, and this is what is printing the instance variable. Fine. Let's come back to the next program. Super keyword can also be used when we invoke a super class method. So same thing, but this time we are just invoking a super class method, right? So this also we have seen in one of the example, the first example, but we'll try to only write a code with calling the method, not a variable.
So here variable calling is not happening with the super keyword, only method calling is happening. Let's try to have a look at this. So I'm just going to make it main.java. Right, so have a look, colorful d equal to new colorful d dot work, and d dot work, that means it will come here because colorful is extending rainbow, so d dot work is here, and then it says super dot rain. So directly it will first go to our rain method of rainbow, it will print raining, and then it will come to sun, and then it will say bright sun shining, right? That's how it's gonna print. Raining heavily will not get printed. If you can see here, raining is getting printed and bright sun shining is getting printed. Raining heavily is not getting printed because we have never called rain method of colorful class. We have called rain method of rainbow class. Right, so very easy example. I hope this clears your mind with the super keyword usage. Now the next one is very, very important, which is super keyword can also invoke a super class constructor. So this we have not seen till now. So let's try to have a look at it. So we have again the same example, colorful d equal to new color. Now see here that we have not calling any particular method or any particular variable here. We are just writing or creating an object of d. But you must be knowing that when you do this, you actually call this particular default constructor. So colorful constructor is getting called, right? Do we have any colorful constructor in our colorful class? Yes, we do have, and it is written here super with that bracket, just that, right? So do you remember, can you recall any particular keyword which we use in the same manner? How we have written super and then the bracket and then the semicolon. Do you recall any other keyword? How do we use this? Any other particular keyword? You must be remembering about it because I have taught you that. Any other keyword which looks something like this? Which is that keyword? With which you can access the variable also, method also, and constructor also. There is a keyword just like super. It doesn't act like super, it doesn't do the work of super, but we can use this keyword with. So I have told you the answer itself. That's this keyword, right? This keyword is used with variable, this keyword is used with constructor, this keyword is used with method as well, right? And this keyword, when we use it with constructor, we write it in this manner. Do you remember? We write this and then the bracket and then the semicolon. Yes, this keyword work is something different than super, but we write it in the same manner, right? Whenever we use the variable, we use this dot I equal to I, right? Remember this dot method name and then semicolon to call that, right? And then this bracket and then semicolon, that is for constructor. So same way we write for super also. If you are not remembering कि लिखते कैसे से, then you can remember this keyword का syntax. That's the same syntax which we follow here. It's just that this keyword is used for a purpose where we want to point at the current class, object, variable, or method or constructor. But super keyword is used to invoke the super class, variable, method और constructor. दोनों का लिखने का तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस उसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है. So if we have written here like something like this, that means we are invoking the constructor of our super class. So constructor का super class invoke होगा, तो सबसे पहले वो इधर आएगा and it will get printed rainbow is mesmerizing. After that it will come back here, it will print colors are amazing, and then it will end the code. So let's try to do this particular code. I'll just remove this and I will put up a code here which is as simple as it is, and we are just going to write here main. So सबसे पहले colorful का constructor is getting called, it will come here, it will come here, and then super constructor is getting called, so that means it will come here, rainbow is mesmerizing will get printed, after that it will come here, it will print colors are amazing. So let's just run this and you can see same output. Got it? So this is how your super keyword is working, right? So I hope you got a perfect idea what is it. We will try to move into abstraction, but right now what we are going to do is I'm going to just give you some of the questions and you have to explain me or you have to just give me the output of that. Okay, so are you ready for that? Right, let's try to see. So I'm going to just take some of the questions from anywhere and I'll just put up the program here and you have to just answer what will be the output of that. Okay, let me just find something which will be interesting because same example I won't be giving you. So let's try to find something which you won't be able to do it.
Okay, so I've already explained you this particular example, right? You can see this example. Write this example, you can see how easy it was, right? कलरफुल का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, फिर उसने सुपर कंस्ट्रक्टर लिखा, तो मतलब वो सीधे रेनबो वाले में चला गया, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर यूजिंग अ सुपर constructor, super keyword with the constructor, correct? That's what is happening. Have a look at this example. Let's try to understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है, okay? So this is also one of the exception which happens. So what I'm going to do here is I'm going to do some changes. I'm just going to make this as commented. Okay, so I'm not writing super. This is a commented statement. I'm not writing super, right? So meanwhile हमारा explanation क्या है? What is our logic? That colorful constructor will get called and colorful will print me colors are amazing. Let's try to run this. Let's try to run that. Can you see what is happening? My super constructor is itself commented, but still it is printing rainbow is mesmerizing, and then it is printing colors are amazing. What is happening here? Why is it doing like this? What is the fundamental here? What is basically happened? Because this question will be asked in your interview or in your MCQ as a 4-option kind of question where they'll ask what will be the output of this. And maybe unknowingly you will correct this particular option where only colors are amazing is written, right? Now what is happening here? So basically the fundamental thing of this is that when we are writing main.java class, right? So in the main.java class, we have only written this code, okay? Where this line is not there. This particular line is not exactly written. So I'll just make it vanish from here, okay? So this is what is main.java, how the main.java looks like right now. When we compile this program, when the JVM compile this program, then what happens? Super keyword automatically comes here. Super constructor automatically comes here, okay? So why is it coming here? Because you are only working with constructor first of all, and you have an inheritance. So the concept is that if you have a constructor of your subclass and subclass is inheriting properties from superclass, then superclass constructor will also get called. Now let's hit this logic. Do you remember the instance of wala operator, right? In instance of wala operator, what did I teach you? I taught you that if D is an object of colorful or not, so it will say true. If you write D instance of colorful, it will say true because yes, D is an object of colorful. Also, when we write D is an instance of rainbow, still it will say true because D is also called as an object of rainbow because rainbow and colorful are both in inheritance, right? So D is an object which is related to both of them, not only colorful, right? Because we have created the object of a subclass, of a child class. Suppose if I create an object of a rainbow, right? Let's say C is the object name of rainbow. So if I write C instance of rainbow, then it will say true. But if I write C instance of colorful, it will say false. Why? Because rainbow is a parent class and it is not inheriting properties from its child. Colorful is inheriting properties from its parent. Parent is not inheriting anything from its any other class, correct? So जो ऑब्जेक्ट रेनबो का है वो सिर्फ रेनबो का है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कलरफुल का है वो कलरफुल का भी है और उसके पेरेंट क्लास का भी है. In the same way, when you're calling this constructor from here, not only colorful constructor is getting called, rainbow constructor is also getting called because object created is not only of subclass, it's also of superclass. So this is the concept behind this exception. Why this exception happens? Even if you write super, the same output. Even if you don't write super, the same output. So basically, when JVM executes this file where super constructor is not there, at that time what happens? Basically, when it compiles, it automatically writes this super constructor there. So first rainbow का constructor call होता है और उसके बाद कलरफुल का. बट मेक श्योर दैट यू शुड हैव द कंस्ट्रक्टर. अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली ये कॉल नहीं होगा. ओके, सो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कंस्ट्रक्टर कहीं मेंशन किया है तभी वो कॉल होगा इनहेरिटेंस में. हैव यू
guys got this particular thing or not? Yes, parent class constructors will always call first. This is an exception. हर कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक एक एक्सेप्शन दिया है. इंस्टेंस ऑफ में भी मैंने आपको एक एक्सेप्शन दिया है. जब मैं दिस कीवर्ड पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको एक्सेप्शन दिया है. अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग में भी हमने आपको एक एक एक्सेप्शन दिया है. तो ये सारे जो एक एक एक्सेप्शन का प्रोग्राम्स निकल रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, कीप इट इन अ माइंड की ये क्वेश्चंस बन सकती हैं. ओके, ट्राई टू डू दैट. नो, सी प्लस प्लस आई डोंट थिंक इट इज हैविंग इंटरफेस. सी प्लस प्लस में इंटरफेस नहीं है. आई डोंट थिंक सो. फाइन. So please make sure that you know this concept, that super constructor in this way, if you are calling super constructor, by default also it will get called. After 13 line, 8 line executes. After 13 line, 8th line executes, or line 4 executes. In PHP, I don't know, Shanu, whether interface is there or not. I don't know about that. So Tanuj, in this case, when I'm talking about this example, right? In this example, what happens? First line 13 gets execute. After that, line 7 gets execute. And then line 8, after line 8, line 4, and after line 4, line 9. I hope you got it. Okay. Whenever in interview you are explaining which line will get executed, do not write like something like that after 13 line 8 line, because every line gets executed. Okay, executing line is not only that line which prints something. No, executing line is every line. Every line is executing in some or the other time. So first static void main gets executed, then second line is this one, then it comes here, and then it goes here, and then it goes here, then it comes back here. This is how it happens. Fine, Tanuj. Suppose if it is not written, suppose super keyword, super this constructor is not written, then what will happen? From here, it will directly go to rainbow. You can imagine that. From here, directly it is going to rainbow. But internally, JVM has already created this thing. Internally. And internally, when JVM is working, JVM knows that I have written a super constructor. I have to go to rainbow. ठीक है, तो इंटरनली आप मान लो कि जब आप डॉट जावा से डॉट क्लास कन्वर्ट करते हो, जब आप कंपाइल करते हो प्रोग्राम को, तो JVM ये सुपर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली. ओके, दैट्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. Okay, so let me give you one example where I'm using my subclass, superclass, inheritance, this keyword, everything mixed up, and let's try to see whether you can answer that particular thing or not. So I'm just going to do this change, and I'm just going to write here main. Fine. So have a look here. We have the main method where we are actually creating an object of employee, which is a pure object of employee, which is E1. And employee is basically a subclass, as we can see. That means E1 is an object of person also, right? But secondary, primary employee. And then employee is a parameterized constructor, if you can see. And it's passing 3 values. One is ID, name, and salary. So it's gonna go directly to where? See, because you do not have to go to this line first. Why? Because already we have a constructor call, which is a parameterized constructor call. So you cannot go here. After this line, the execution will first go to this part, and it will pass all the values. It will pass ID1, name Ankit, salary, right? Everything will pass there. But after that, something amazing is written. It's written super ID name, and then it's written this dot salary, and then super ID name. I don't know what will happen here, how it's gonna take it. So please do let me know what will be the output of this. Have a look at the whole code. Have a look at what is happening, and then try to tell me what will be the output of this, what it is gonna display in my output. It's not tricky, it's very easy. I'm just giving you a hint that it's not tricky, but please have a look at it very clearly and then tell the output of it. Okay, it's not tricky, it's just that यहाँ पे this keyword भी यूज हो रहा है, यहाँ पे constructor भी यूज हो रहा है, method भी यूज हो रहा है, बहुत चीजें यूज हो रही है. That's why this question.
So what will be the answer of this? Anybody, can you please give me? Tanuj, Kapil, where are my other students? See, so basically here, same thing is happening. Basically from here, the ID, name and salary, all the three things are getting passed here, right? So basically the first parameter is a integer, second one is an string, and the third one is a float. You don't have to actually care about that. What you need to care about is what is getting passed in our super class. So in a super class, you can see that this is not a method which is happening. This is basically a constructor super call, right? So it's a constructor super call which is happening, and it is only taking ID and name. So first of all, you need to make sure that आपके parent के पास, दैट मीन्स आपके पर्सन क्लास के पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ दो चीजें एज अ पैरामीटर है. तो ऐसा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बात होना चाहिए वहां पे. इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर वेयर ओनली टू पैरामीटर्स आर देयर, this will not go above. This is not gonna go above. Okay. So in many of the questions, this will be a tricky question again. Suppose if I write here salary, okay, then it's not gonna go above. See, it's giving me an error, right? Because you don't have that kind of constructor. So it's gonna go here now because we can find that kind of constructor. And now you can see that int id and string name, these are two variables which is a person. But this int id and this string name are two variables of constructor जिसका वैल्यू हमें यहां से मिल रहा है. So we need to match it. We need to match the class का variable and constructor का variable. So we are matching these both things. At this time, we are using this keyword because we need to make a difference between this ID and this ID and this name and this name. So that's why we are using this keyword. Once these are all fine, then we'll come back. So coming back, we have something here where we are putting up the salary. Why we are putting and matching up the salary here? Because salary is a variable of imp, but ID and name is a variable of person. So आप this keyword वहीं पे equal करोगे जहां पे आपका वो variable declare हुआ है. ID and name is the local variable of person, so it has to be matched here itself in its own constructor. Salary is a local variable of imp. You have to match it in its own constructor. Remember this, what I'm saying here, right? Right? So wherever you have your own local variables, you have to make sure that you're matching it from your constructor then and there. You cannot match your salary here. Okay. So now once we have done that, after that what we are doing. So now we got all our values and we are just calling our display method. It gets printed, right? So very easy example. It's gonna print the same thing which I think Tanuj has already written, one Ankit and salary. That's what is gonna print. Salary you guys have written in integer. That's fine. That's a silly mistake, but yeah, it's a float, so 0.0 will be there. That's fine. These options can be there. So whatever option you have written, na, 1 Ankit 45000, please make sure that this can be also one of the option in your MCQ. So please see carefully and choose the option very wisely. Now let's move ahead. So let me see if I can find any one more example of super keyword. Hi Somu. And then we will move ahead. No problem. I hope your exam was fine. So I'm just going to take one more example. Let me just have a look at it. Then we are going to end this session. So आपको मैंने constructor का पूरा example बता दिया है. So I think constructor is fine with you. Let's take one example of method and let's try to see if you can do this. And then we'll move to abstraction directly. ठीक है? So I'm just going to write one particular code here. Let's see if you can answer what's gonna be the answer of this. So I have here one static main void method, and we have here student s equal to new student. S is an object of student,
s dot display. So display s dot display. Okay, so we have a person where we have a void message method. We have a student which is providing an inheritance, showing an inheritance with the person class, and then we have the message also here. That means overriding is happening, right? And also there is a one more display message which is written here. We have some callings here, and then the main method in which we are creating the object. So have a look at it and tell me what will be the output of this. I'll keep my thing here, because main method, you know what is happening, is just one object which is getting created of a student and s dot display. So now tell me what will be the output of this. Here in EMP, and person members are private. Yes, this is person class, this is student class. Mohit, I think you have written or you have asked a question for my previous example. Here in EMP and person, I don't think I have mentioned it as private. See, private means when you're writing private. Okay. Acha, you are saying the output. Okay. I thought you were just asking. Fine. Yeah, let's have a look how it will work. So have a look at it. Display. So display will come here, right? Because the S is an object of a student, so it's gonna come here. And then we are doing message call. Now have a look at it. Message call. Message call is what? It's just a message call. It's not saying that you have to go and have a look at the person ka message. No, it's just message. The message is here only, right? Let's try to execute this. You can see here it's printing this is the student class and then this is parent class. So first message call is happening here, and then when we have written super dot message, it's gonna go above. So Kapil, your answer is wrong and all other answer is correct. Do not get confused, guys. Public, default, protected, and private. All four are different things. Public is not default. Default is not public. No, it's not. If you have not seen my access modifier class, please go ahead and watch it. See, this is a default class. This is a default class. This is a default class. Okay, this is a default one. So wherever you do not write any particular thing like public, private, or protected, then that's a default. You have not mentioned here anything, right? So it's a default class. These are all default class. What happens in default? Basically only your package classes can access this. Other package का class इन classes को access नहीं कर सकता. Fine. एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे क्लासेस के बारे में. आई टेल यू अबाउट दैट लेटर ऑन. दैट इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन. एक फैक्ट है यहाँ पे विच इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर ऑन. अभी कंफ्यूज नहीं करना है. ट्राई टू बी वेरी क्लियर हियर. ओके, नेक्स्ट अभी और कन्फ्यूजन्स आएंगे, सो वेट फॉर दैट. I hope there's no confusion in this one. So I'm just going to close all the things for my super. Okay, fine. Now let's come to our abstraction. Because अभी जो है abstraction से ही आपको बाकी के टॉपिक समझ में आएंगे. Maybe abstraction, if you will read, then you will understand how interface works, and then only you can understand how multiple inheritance is done. So please try to understand this particular topic very nicely, because here if you're not understanding anything, interface समझ में नहीं आएगा. Fine. So let's have a look. See,
When we say class, right? So when we say class, that means we are creating a blueprint, correct? When we say object, that means we are creating a real object. So remember that example of mine where I told you that if I want to design a car, which is a real object, I have to have a blueprint. I have to have a sheet of paper where I'm writing all the states, the properties, the design, the height, width, the weight, properties, everything, right? So in that blueprint, if I have all the informations, by looking at that information, I can create an object. Yes or no? And this blueprint is called as class. So if it is having all the information, then this is also called as class. Using this class, I can create an object, and that object will be a real object. This theory is known to you, correct? Now suppose if in that blueprint, right, which I was calling it as class, if in that blueprint, in that class, if some informations are not there, some informations I have, some informations are not there. Like I know the car ka height, I know the car ka weight, but I don't know the width, I don't know the color of it, I don't know the exact style of it, I don't know how it will be created, I don't know the properties of it. These things I don't know about that car. So my blueprint is half known, half unknown, right? Half things I know from my blueprint and half things I don't know. So will you be able to use this blueprint to create that object car? No, right? You won't be able to do it, because if you know only half information, you won't be able to create an object, correct? So this is now not a class. This is called as abstract class. Okay? This is called as abstract class. This is not now a class. This is an abstract class. Fine. So have a look at it. When we have both concrete and abstract information about an object, जब हमारे पास पूरा एक इंफॉर्मेशन होता है और आधा इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं abstract class. ठीक है? When we have both concrete and abstract. Concrete means when we have complete information, and abstract means when we have only half information. So when we have some informations and when we don't have any information, if we have such cases, then we call it as abstract class. Like we know about width and height, but we do not about the weight, the design, the properties and other things. So this is what is an abstract class. So it's mandatory to use abstract keyword in front of abstract methods. ठीक है? हर abstract methods के आगे हमें abstract keyword लगाना पड़ेगा. Abstract class can contain data members. By default, data members are not public. By default, data members are not public. Abstract class के अंदर by default data members will not be public. Okay? If an abstract class contains only abstract methods, then it is better to stick to interface. So please try to understand this particular line. अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे ब्लूप्रिंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशंस हैं तो उसको मैं क्लास बोल सकता हूं, क्योंकि उन इंफॉर्मेशंस को यूज करके, उस ब्लूप्रिंट को यूज करके मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं. आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. बट इफ द अदर पॉसिबल केस वाज, बट इफ in that blueprint I have only half information known and half information is not known, then I cannot create an object. I cannot use that blueprint to create an object. और उसको हम blueprint भी नहीं बोल पाएंगे. We will call it as abstract class. We cannot call it as class. We will call it as abstract class. Now imagine third situation where you have a sheet of paper and it's totally empty. मतलब कि हाइट है, विड्थ है, लेकिन वैल्यू नहीं है. आपने उस ब्लूप्रिंट में लिखा है हाइट, बट कितना हाइट वो नहीं पता. विड्थ लिखा है बट उसका वैल्यू नहीं पता. ड्राइविंग करना है, कैसे करना है नहीं पता. इस गाड़ी को यूज कैसे करेंगे वो भी नहीं पता. कुछ नहीं पता. नॉट इवन वन सिंगल इंफॉर्मेशन इज देयर इन दैट ब्लूप्रिंट. तो ना वो अब क्लास है, ना वो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो एक इंटरफेस हो गया है. ठीक है? क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इंटरफेस. फाइन. नाउ हियर व्हाट इज रिटन? If an abstract class contains only abstracts methods, then it is better to stick to interface. ठीक है? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके? बिकॉज अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो लेट्स ट्राई टू सी suppose if I'm writing a class, okay, and I've written here a class car. Fine. In this class car, let's say I'm going to write here a height. Okay, let's say I've given here 100. Please try to see the example very clearly.
बिकॉज ये समझाएगा आपको कि एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। और मेरा जो नेक्स्ट है ना वो एक विड्थ है, लेट से इसको मैं दे देता हूँ 200, ठीक है। और मेरा लेट से एक और वेरिएबल है, उसमें है नेम, एंड लेट से इसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑडी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कुछ मेथड बना लूँगा। सो लेट से पब्लिक वॉइड, लेट से गाड़ी का प्रॉपर्टी ड्राइविंग होता है, सो आई एम डूइंग दैट एंड आई एम गोइंग टू जस्ट print here something. So let's say I'm just going to print here amazing, right? मैंने यहाँ पे amazing print कर दिया. I'll have one more method, entertainment, ठीक है। अब आप ये देखो, इस कार के पास सारा इंफॉर्मेशन है। I have the height, width, name, I have the driving property, I have the entertainment property, everything is there. So we can create an object of it, and that's why it is called as a class, correct? But now suppose that ये name है लेकिन इसका information नहीं है, यहाँ पे भी ये इसका information नहीं है, okay? Again, this particular method is also there but it is not having any information, right? This thing is also there but it's not having any information. So half information is there, half information is not there, correct? ठीक है, half information is there, half information is not there, right? Let's say that I have this as well. So I have two information here, height and this particular method, right? But I don't have this one, I don't have this one, correct? The methods, please understand, the methods, these are the methods which are only declared and not defined. The methods which are only declared and not defined. डिक्लेयर्ड मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। आपने एक डिक्लेयर किया है कि यू आर यूजिंग अ मेथड। डिफाइन, व्हाट इज डिफाइन? डिफाइन इज दिस थिंग दैट यू हैव रिटन समथिंग इनसाइड दैट कर्ली ब्रैकेट्स, दैट्स डिफाइनिंग, करेक्ट? सो this particular method is only declared and not defined. So what I'm going to write here is methods which are only declared and not defined, those are abstract methods. ठीक है, those are abstract methods. That means we need to write a keyword here, abstract. Okay, we need to write here a keyword which is abstract. Fine, we need to make a keyword here that is abstract. This is the first rule which you should be knowing in abstraction. The methods which are only declared and not defined, those are abstract methods. I'm not going to read any comments right now. We'll explain this concept and then only I'll move ahead to the comments, okay? Now, the second rule, if we have at least one abstract method, at least one, that means अगर एक भी है तो भी, then the whole class will become an abstract class. If we have at least one abstract method, then the whole class will become an abstract class. अगर हमारे पास एक भी abstract method है हमारे class के अंदर, तो वो class abstract class हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, you can see it says make car abstract, इसीलिए वो error दे रहा है। So I have to make this as abstract. ठीक है, we have to make this as abstract. Fine, now have a look. जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जब वी आर ओनली डूइंग डिक्लेरेशन, राइट, when we are only doing declaration, we write something like this, okay? When we are defining, then only we give this curly brackets. Why? Because we are defining. So defining करने के लिए एक space चाहिए, एक block चाहिए. So that's why this block is created, correct? So define करने के लिए एक block चाहिए जहाँ पे मैं code लिख पाऊंगा. That's why we put this curly brackets, okay? So this is what is your definition. But declaration में हमें कोई block नहीं चाहिए क्योंकि हमें code लिखना नहीं है. तो you have to do something like this, okay? So now this is what is a perfect example of abstraction, okay? This is a perfect example of abstraction. सर abstraction data hiding अलग अलग properties हैं, होती हैं oops की नहीं, data hiding abstraction same होता है,
बट डेटा हाइडिंग उसको नाम दिया जाता है सी प्लस प्लस में, एब्स्ट्रैक्शन उसको नाम दिया जाता है जावा में। सेम होती है, दोनों सेम ही होती है, बट इट्स जस्ट दैट नेम इज डिफरेंट बिकॉज इन जावा वी यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं होता है, राइट। सो नाउ ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। बट यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पे वी हैव सम इंफॉर्मेशन विच इज देयर विद अस एंड सम इंफॉर्मेशन विच इज नॉट देयर विद अस, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अभी मैं एक चीज बता रहा हूं, we need to only understand that functions are the main considered point in abstraction interface. Methods and functions are the, दोनों सेम ही चीज है, methods are the most important consideration when you are writing abstract or interface, ठीक है। So let's say कि ये states नहीं है यहाँ पे, we have only these two functions here, okay, because priority abstraction interface में functions को दिया जाता है। So right now this also is correct, fine. Suppose if I have one more function or method, let's say public void show, यहां भी हमने यहां डिफाइन किया है, ठीक है। तो we have defined it, let's say ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है, ओके। दिस इज फाइन, दिस इज टोटली फाइन बिकॉज दिस मेथड इज गेटिंग डिफाइंड, सो दिस इज टोटली फाइन, दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टोटली फाइन। जो भी मेरा मेथड था जिसके अंदर डेफिनेशन नहीं हो रहा था उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, और अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो भी मैंने कर दिया। नाउ सपोज दैट all the methods inside the class are abstract, all the methods inside the class is abstract method, then that class will become a interface. मतलब कि मेरा ये सारा मेथड अगर डिफाइंड नहीं होता, ये सारा मेथड मेरा अगर डिफाइंड नहीं होता, एक भी मेथड डिफाइंड नहीं होता, तो सबसे पहले तो मुझे यहां पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता, राइट। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी होती कि मैं इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल ही नहीं सकता, आई हैव टू चेंज इट टू इंटरफेस, ठीक है। आई हैव टू चेंज इट टू इंटरफेस। सो नाउ दिस इज एन इंटरफेस, व्हाई? बिकॉज इन इंटरफेस you do not know anything about, so I do not know anything about it. I know that driving है, entertainment है, show है, but क्या मुझे पता है कि ये क्या print करेगा? Do I have the information about it? Am I printing something in my methods? No, in none of the methods I'm not doing anything, correct? So that's why we need to make our classes as what? As interface, fine. So अभी समझ में आया class, abstract class और interface में difference? I hope you must have got it. So see, जब आप ये लिख देते हो तो you do not have to also mention this abstract public and all, because आप just इतना लिखोगे तो भी चलेगा, because all interface, जब interface बोल रहा है कि see I will be used whenever you have methods only declared and not defined. I'll be only used when all your methods are only declared and not defined, right? So that's where we use interface. So it does not have to write abstract, because अगर आपके क्लास के अंदर कोई भी ऐसा मेथड है जो सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइन है ही नहीं, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे ना, बिकॉज मेथड्स विच आर ओनली डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिफाइंड दोज आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देते हैं हम लोग इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस विल हैव ऑल एब्स्ट्रैक्ट methods, or we can also say that if all our methods in a class are abstract, then that class is an interface, not a class. If all our methods in a class are abstract methods, then that class is an interface and not a class, okay. Next thing,
all interfaces will have all interfaces are abstract classes, but all abstract classes are not interfaces. I hope you got this. सारे इंटरफेस क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होंगी, राइट राइट, क्योंकि क्योंकि आपका सारा मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट ही है ना, सारा मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट ही है, राइट. सपोज इफ आई राइट हियर suppose if I write here abstract public, what does that mean? That means the same. It is not going to change anything in your method, right? So here also we can do this, right? And also we can do here, we can also write this here, right? There is no problem in this. So abstract हो सकता है कोई भी class, right? Because all our methods are also abstract. So all interfaces are abstract classes, but all abstract classes are not interfaces. हाय तनुज, सब रेड, क्योंकि हमने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा ना. इसको लिखने का भी एक तरीका है, दैट आई विल कम टू बैक लेटर, क्योंकि उसमें और भी कीवर्ड्स यूज होती हैं. यू कैन नॉट जस्ट राइट सिंपली लाइक दिस. ऑल्सो मेन मेथड नहीं है, बहुत चीज़ें यहाँ पे नहीं है अभी, सो इट्स गिविंग यू एरर. इसमें और भी बहुत चीज़ें होंगी विद दीज कीवर्ड्स, विद पब्लिक, विद वॉइड. वी ऑल्सो राइट सम मोर कीवर्ड्स, वो हम लोग अभी आपको नेक्स्ट में बताएंगे. दैट्स व्हाई इट इज गिविंग रेड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड the points which I'm writing here. These are correct points. Do not get confused that no यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, सर गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि सही फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. सी यहाँ पे लिखा है क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड, राइट. तो ये बेसिकली यहाँ पे हम, ठीक है, अभी एरर नहीं आ रहा है. सो सम थिंग्स आर देयर विच इज मिसिंग हियर, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग रेड कलर. इंटरफेस में भी जब मैं लिख रहा था तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी, इसलिए वो रेड कलर दे रहा था. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स फर्स्ट, क्योंकि आगे एग्जाम्पल्स तो मैं कराऊंगा, बिना एग्जाम्पल्स के मैं नहीं जाऊंगा, राइट. तो डोंट वरी, एग्जाम्पल्स आएंगी, सब आप समझोगे. इज जस्ट दैट फर्स्ट इन टू अंडरस्टैंड दीज 6 पॉइंट्स. और भी 2 पॉइंट लिखूंगा मैं लेटर ऑन. मेथड्स विच आर ओनली डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिफाइंड, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. If we have at least one abstract method in our class, then the whole class becomes an abstract class. ठीक है. Interface will have all abstract methods. If all our methods in a class are abstract methods, then that class is an interface, not a class. ठीक है. All interfaces are abstract classes and all abstract classes are not interfaces. Fine. Can we move ahead? Let's try to move ahead. So if an abstract class contains only abstract methods, अब आप इसको समझो, क्योंकि आप अपने प्रैक्टिकल देखा तो अब इसको समझो. इफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, मतलब वैसे सारे मेथड्स जो सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइन नहीं है, देन इट इज बेटर टू स्टिक टू इंटरफेस, राइट. वो ये नहीं बोल रहा है कि जबरदस्ती आप उसको इंटरफेस बनाओ, बट वो ये बोल रहा है कि आप उसको अच्छा होगा कि इंटरफेस बना दो, क्योंकि उसमें कुछ भी डिक्लेयर्ड नहीं है. बंदे को पता ही नहीं है कि उस ब्लूप्रिंट में कुछ है ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं. सो दैट्स वाज एन इंटरफेस. इफ अ क्लास implements an abstract class, then it has to implement all the abstract methods that are present. अब इसका मीनिंग क्या है? If a class implements an abstract class, अब आप ये समझो, ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. सो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से आपके पास से ये क्लास कार था, ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी. मान लेते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. अच्छा, ओके ओके, एंड लेट्स प्रिंट हियर समथिंग. लेट्स प्रिंट हियर स्टॉप, राइट. इसको हटाना पड़ेगा.
इसको भी यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं. लेट्स आई जस्ट प्रिंट हियर हेलो. ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता क्योंकि इसका डेफिनेशन है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता. ओके फाइन, नाउ हैव अ लुक. तो ये प्रोग्राम ठीक है क्योंकि इसमें क्या किया हमने, इसमें बेसिकली हमने एक क्लास लिया है कार, और इसके अंदर 3 मेथड्स हैं जिसमें से एक मेथड जो है वो सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइन नहीं है. तो अगर वैसा कुछ सीन है तो क्या होता है, वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है. सो वी हैव मेड दिस मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट, बट वी ऑल्सो नो दैट इफ वी हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन आवर क्लास, then the class also becomes an abstract, and that's what you have written here. Now अगर आपके ब्लूप्रिंट में, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके ब्लूप्रिंट में हाफ इंफॉर्मेशन है हाफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. मैंने आपको यही बताया. तो अगर आपको नहीं पता है कि इस ड्राइविंग के अंदर क्या होना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आपको ड्राइविंग का मेथड नहीं पता. मतलब आपको ये नहीं पता है कि स्टीयरिंग व्हील उसमें नीडेड है कि नहीं, क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर नीड है कि नहीं कार में, वो आप लिखा ही नहीं है आपने. करेक्ट. सो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. Let's try to explain it a much more better way. So let's see if I write here class and I say main and I just write here ये कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है. फाइन. सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. ये कार यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, राइट. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द एरर. सो यू कैन सी हियर implement methods. It is saying we need to implement methods. It is also saying that split into declaration and assignment. कुछ एरर दे रहा है, राइट. What it is saying? It is saying that hey, your car class is not having all the information. You need to do something. Now what we need to do? Let's try to understand. So what we need to do here is we need to have one more class which will show inheritance property with class car. So let's say I'll create a class and I'll say here Audi and I'll say here extends and I'll say car. ठीक है. तो मैंने बेसिकली एक क्लास क्रिएट किया है. कुछ गलत है. Okay, fine, I'm doing that. Okay, so I've written this particular class which is showing inheritance with car, right? Now what we need to do here is, see, what is the meaning of inheritance? The meaning of inheritance is that Audi will fetch all the properties from car, yes or no? So Audi will fetch all the properties from car means ये entertainment वाला method और ये show वाला method यहाँ पे already है, correct? ये वाला method भी यहाँ पे है, लेकिन उसको हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. वी नीड टू डिफाइन दैट हियर. वी नीड टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर मेथड हियर. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी नीड टू राइट पब्लिक वॉइड ड्राइविंग, और इसको यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा. So all the methods which is not defined in your abstract class, you need to define it in your implemented class or inherited class or in your subclass or in your child class. All the methods which are not defined in your abstract class, you need to define it in your child class. So we need to define it here. So we need to define this here. So let's say I'm going to just write here driving. ठीक है. ठीक है. Also this class can have its own method as well. इसके कुछ अपने भी methods हो सकते हैं. So let's say इसके कुछ अपने methods हैं. Let's say इसका अपना method का नाम है run, और इसमें भी कुछ प्रिंट हो रहा है. ठीक है. सो लेट्स से इसके अंदर प्रिंट हो रहा है रन. ठीक है. एनी एरर? नो एरर. करेक्ट. नाउ कैन वी क्रिएट द क्लास ऑफ दिस, सॉरी, कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास? इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कार का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. बट कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडी? यस वी कैन. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू पुट हियर कार and we need to put here Audi. So हम लोग क्या कर रहे हैं, अपकास्टिंग कर रहे हैं. और अपकास्टिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ Audi with the help of car, and we can do this. We can do this and we can call any particular method. So it will give me the output of driving. We can call run method also, we can call show method also, we can call entertainment method also. So हमें पहला चीज क्या समझ में आया कि we
cannot create objects of abstract classes. दूसरा चीज क्या समझ में है? All abstract methods means what? Those methods which are only declared and not defined. All those methods, all abstract methods should be defined in the sub or the child class. It should be, okay? Not should be, must be. ठीक है? So we cannot create objects of abstract classes. All abstract methods which are only declared and not defined, that means all abstract methods must be defined in the sub or the child class. One more thing, we can now create object of child class and call the parent class methods. ठीक है? These are the things which we can do. Can we use super keyword in class OD? Yes, you can. You can. But again, make sure that you are calling the methods which are defined here. Correct? Because undefined वाले को call करके कुछ नहीं होगा. Correct? So you can use super keyword here. You can write here super.show. You can do that. There is no problem in it. Super keyword का काम abstraction से related नहीं है. Super keyword का काम है that it should call the super class. It should call the parent class methods, variables or constructors. So yes, you can use it here. There's no problem. Fine now. So I hope these are clear. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि अगर you have an abstract class और आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो तो फिर आप ये सब को कैसे प्रिंट करोगे? आप इनहेरिटेंस यूज करोगे, राइट? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. लेट्स से कि दिस रन फंक्शन is also now not defined, only declared. So if it is only declared, सबसे पहला थिंग हमें क्या करना है? अगर कोई भी मेथड डिक्लेयर्ड, अगर कोई भी मेथड सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड नहीं है, तो मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. और अगर मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमें क्या करना है? उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना देना है, तो हमारा क्लास वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा. तीसरा काम हमें क्या करना है कि हमें अब एक और क्लास बनाना है जो इनहेरिट कर रहा होगा उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को. सो वी नीड टू अगेन क्रिएट वन मोर क्लास. लेट्स से आई एम गोइंग टू पुट इट एज od1 and then we need to say here extends. We need to write here od and then we need to mention here the same method run and we need to define it here. तो मुझे यहाँ पे इसको define करना पड़ेगा and we can write here run. ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं तो अभी देखो od का नहीं बन सकता ऑब्जेक्ट, क्योंकि od क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. तो od क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं बन सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे od1 क्लास बनाया जिसके अंदर जिस प्रॉपर्टी को वो लोग एब्स्ट्रैक्ट बता रहे थे उस प्रॉपर्टी को हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया. अब हम यहाँ पे बस od1 लिखेंगे और ये मुझे रन का वैल्यू दे देगा. ठीक है, एनीथिंग रॉन्ग? कार एस, अच्छा ये कार यहाँ पे नहीं आ सकता. 1 सेकेंड, या ठीक है, फाइन, बिकॉज कार यहाँ पे नहीं है, बिकॉज कार इज दिस od1 इज नॉट एक्सटेंडिंग कार, राइट? इट इज एक्सटेंडिंग बेसिकली od. Fine, s dot run. So you can see even if I run this, let's run this, you can see run is getting printed. Now see here, if I print s dot driving, s dot driving, have a look at here. Driving कहाँ पे है? Driving od में है, तो od1 is extending od, so it will print, it should print driving. You can see here it is printing driving. Now let's say I'm going to print here s dot show, और show का प्रॉपर्टी कहाँ पे था? कार में, कार में है ना, यहाँ पे है शो का प्रॉपर्टी, करेक्ट? सो नाउ यू हैव अ लुक, शो इज ऑल्सो गोइंग टू गेट प्रिंटेड. हैव अ लुक एट इट. रन ड्राइविंग एंड हेलो. व्हाई इज इट प्रिंटिंग दैट?
Audi 1 is extending Audi and Audi is extending car. Which particular inheritance? Multi-level. So it will work, क्योंकि मल्टी लेवल अचीव हो सकता है जावा में. कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं क्या कार का? कार का कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं, उसमें फिर मैं आऊंगा. सी बेसिकली कार एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. व्हेन आई एम सेइंग अगेन, दिस इज ऑल्सो वन अमेजिंग क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं. अंडरस्टैंड दिस. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? दो चीजों को यूज करके, एक तो न्यू कीवर्ड और एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके, राइट? स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, दैट्स व्हाट वी राइट नाउ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. अब जब हमारा क्लास ही एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, व्हेन द कार क्लास इज ऑलरेडी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. उसके अंदर का लॉजिक क्या है? व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? फर्स्ट रीजन इज दैट वी डू नॉट हैव द ऑल इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज, इफ वी डू नॉट हैव ऑल इंफॉर्मेशन, constructor cannot be used here, because what does constructor do? Constructor actually initializes all the variables or properties inside our class, correct? That's what constructor do ना. ये तो मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया. Constructor is used to initialize all our states and properties, means it is used to initialize all our variables and methods. मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डालते हो क्लास में और आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते हो, तो बाई डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जावा कोड में जो उसको बाई डिफॉल्ट वैल्यू देता है. मतलब इंटीजर को 0 दे देगा, फ्लोट को 0.0 दे देगा, स्ट्रिंग को नल कैरेक्टर दे देगा, राइट? हु डज इट? कंस्ट्रक्टर डज इट. अब जब कंस्ट्रक्टर को पता चलेगा कि मेरे पास कुछ है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा. इट वोंट बी एबल टू इनिशियलाइज दीज काइंड ऑफ मेथड्स बिकॉज दीज आर एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशंस, right? So constructor will say ki, hey class, you don't have all these kind of informations, I'm not being able to work with you. If you can define your method in anywhere, then I can do something. ठीक है? So constructor भी बोल देता है कि नहीं, मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है. और कंस्ट्रक्टर को नीड होता है पूरा इंफॉर्मेशन का, ताकि वो आपके चीज़ों को इनिशियलाइज कर पाए, आपके वेरिएबल्स को, आपके मेथड्स को इनिशियलाइज कर पाए, करेक्ट? So when you can't use constructor, how can you create an object? इसीलिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होता है. ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि hey, do you know abstraction? You will say yes, and then he will ask that can you write a code of abstraction? You will write this particular code, and then he will say that can you please tell me कि why can't we create an object of abstract classes? You have to say this reason. You have to say that in abstract classes many of the things are not defined, many of the informations are hidden, or many of the informations are not provided. That's why constructor is finding it very difficult to help this class with initializing, and that's why if we cannot use constructors, we cannot create an object. ये process आपको पता होना चाहिए. Okay? Now once we cannot create objects, we need to find a different solution. The different solution is that we can create another class, and then we can show inheritance with the parent class, and all the methods which are not defined, we can define it in that particular class. Okay? And then we can create the object of that particular class, because that class is having all the information now, right? But suppose that class is also an abstract class, then we need to again create another class which will show inheritance with the upper class, and it will go on. जब तक सारे मेथड डिफाइन नहीं होते, जब तक आपके ब्लूप्रिंट के अंदर सारा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा. ठीक है? आपको अपने ब्लूप्रिंट के अंदर सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. फाइन. Okay, so that's what is saying here. If a class implements an abstract class, right, then it has to implement all the abstract methods that are present. Implement मतलब define करना. ठीक है? Abstract class can contain constructor. Abstract classes can contain constructor. We cannot instantiate an abstract class. ठीक है? So abstract class can contain constructor, but उस constructor का रोल क्या है? सिर्फ चीज़ों को देखना और काम करना. That's it. That means जब आप constructor calling करते हो तब
एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर, बट हम लोग उसका यूज करके ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है, हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. सो फ्लाइएबल करके एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. वाई एम आई राइटिंग है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहले आप वो समझो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी, कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं होंगी. तो यहाँ पे 4 फंक्शन है: स्टार्ट, फ्लाई, लैंड और फर्स्ट एड. फर्स्ट एड एक ऐसा मेथड है जो कि डिफाइंड है, बट ऑल अदर 3 मेथड्स आर ओनली डिक्लेयर्ड. तो वो सारे 3 मेथड क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहलाएंगे. और हमारा दूसरा रूल ये बोलता है कि इवन इफ यू हैव one particular abstract method, then your class will also become abstract. So that class becomes abstract. Done. अब हमको आगे क्या करना है? हमको आगे एक ऐसा क्लास बनाना है जो उन सारे अनडिफाइंड मेथड्स को अपने में डिफाइन करे. तो हम लोग यहाँ पे क्लास एरोप्लेन एक्सटेंड्स फ्लाइबल बना दिए और उसके अंदर स्टार्ट को डिफाइन कर दिए. या डॉट 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 इसलिए दिया है मैंने ताकि प्रोग्राम लंबा हो जाता. So here fly is also getting defined and land is also getting defined in this dot dot dot. Okay, I hope you can understand that. Now everything is defined. That means now I have a proper blueprint. Now I have a proper class in which every information is there. So what we have to do? We have to go to main method. We have to create a object of aeroplane with the help of flyable. आप directly aeroplane का भी object बना सकते हो. There is no problem in that. But here we just want to do upcasting, so we are doing that. And then f dot start will go here. F dot first aid will go here. It will print aeroplane is starting and then first aid is required. अभी ये एग्जांपल समझ में आया, इसीलिए इस एग्जांपल को दिखाने से पहले आई डिड सम ऑफ द थिंग्स हियर सो दैट आप इस एग्जांपल को पहले समझो. फाइन, टिल हियर एनी डाउट्स? टिल हियर एनी डाउट्स? देन विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तक मेन कॉन्सेप्ट हमारा आया ही नहीं है, इंटरफेस आया ही नहीं है. इंटरफेस समझने के लिए मुझे इतना सारा चीज बताना पड़ रहा है. ओके, इंटरफेस इज दैट काइंड ऑफ टॉपिक. नो क्वेश्चन इन दिस वन. So now we'll move to interface. ठीक है, सो इंटरफेस मैंने आपको बता चुका है, आधा से ज़्यादा चीज़ मैंने आपको इंटरफेस का बता चुका है. When we have abstract information about an object, then we can use interface to represent it. That means जब भी आपके पास सारी चीज़ें पूरी abstract हो, मतलब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. You have written height but you don't have value. You have written width but you don't have value. You have written the functions but it's not defined. So it's all just the declaration. Object reference of aeroplane. F is a pure object of aeroplane with the help of flyable class. That's what is the meaning of that. You can say object reference of aeroplane. You can say that object reference variable दोनों same होता है. Reference variable is basically a variable which is pointing towards that object. ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है एक पूरा ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जो उस ऑब्जेक्ट के तरफ पॉइंट कर रहा है. ये मैंने शायद पिछले एग्जांपल में बताया था, तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो सिर्फ टर्म्स हैं. ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बोलते हो आप एक चीज को डिनोट करते हो, एक बड़ा सा चीज को डिनोट करते हो. रेफरेंस वेरिएबल आप उसको बोलते हो, वो ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ. So yes, F is an object reference variable. You can say that. You can say that. An interface cannot have a method definition except default and static. अच्छा, पहले आप ये समझो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके abstract class में सारा ही method, all the methods are abstract. That's what I've written here ना, कि if all our methods in a class are abstract methods, then that class is an interface and not a class. Also, I have told you that all interfaces are abstract classes but all abstract classes are not interface. तो इसका मतलब कि अगर मेरा ये दोनों मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर्ड है, तो सबसे पहली बात तो ये दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी. और दूसरी बात ये कि यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने का कोई फायदा नहीं है. यू कैन मेक इट एज इंटरफेस. You can make it as interface, right? Correct? Fine. And now what you can do is you can carry on with it. अब आप यहाँ पे ये देखो कि when I am saying you that
if you have any class where all the methods are abstract methods, where all the methods are only declared and not defined, then that class is not a class, it's an interface. Then what happens? What we need to do? We need to do the same thing. We need to again create a class which can show inheritance with this particular thing. Why? Because same thing, car के लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा. That means we cannot create an object of an interface. Again, we cannot create an object of an interface. क्यों? क्योंकि कार के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आके पागल हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर विल से दैट आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, व्हाट आई विल डू हियर, सो आई विल नॉट be able to help you to create with an object. So car का object भी create नहीं होगा. The another thing what we can do is we can create a class and we can show inheritance with this particular thing. Okay, right, that's what. But now again this is also giving me an error. ये भी मुझे एक एरर दे रहा है. सर इंटरफेस की जगह एब्स्ट्रैक्शन लिखा तो एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा. सी, अगर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख दोगे, इफ यू आर राइटिंग दिस, एरर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वही लिखा है ना, ऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर नॉट इंटरफेसेस बट ऑल इंटरफेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. ठीक है, यही चीज मैंने यहां लिखा है ना. अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप वो भी नहीं समझ पाओगे जो आपने लिखा है. ये दोनों लाइन को समझो. क्या मैंने यहां पे लिखा है? मैंने ये लिखा है कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर नॉट इंटरफेसेस. मतलब कि दो तरीके के एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे. एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा जहां पे आपके पास कुछ मेथड्स होंगे जो डिफाइन होंगी और कुछ मेथड्स होंगी जो डिफाइन नहीं होंगी. उसको भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये भी होगा जब आपके पास सारे मेथड्स डिफाइन नहीं है. एवरी मेथड, ऑल दी मेथड्स आर नॉट डिफाइंड, ओनली डिक्लेयर्ड, तो उसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे. तो ऑल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर नॉट इंटरफेसेस. सिर्फ वही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस होती हैं जिनके पास कोई भी मेथड डिफाइन नहीं होता है. राइट? अब अगर मैं इसका बात करूं कि ऑल इंटरफेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यस, ऑल इंटरफेसेस आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. क्योंकि इंटरफेस को हम लोग बोलते ही इंटरफेस है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं होता है. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सक रहा हूं क्योंकि मैंने ये बहुत बार किया हुआ है. सो आई नो द कॉन्सेप्ट. तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख सकते हो और आप यहाँ पे इंटरफेस भी लिख सकते हो. दोनों काम करेगा क्योंकि दोनों ही केस में आपके पास कोई भी चीजें यहाँ पे डिफाइन नहीं है. ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको तभी लिखना है जब आपके पास कुछ मेथड्स डिफाइंड हो, कुछ मेथड्स डिफाइंड नहीं हो. आप इंटरफेस तभी लिखो व्हेन यू हैव ऑल द मेथड्स अनडिफाइंड और नॉन डिफाइंड, तभी आप इंटरफेस लिखो. ठीक है, सो वी आर डूइंग द सेम थिंग बट स्टिल इट गिव्स मी एन एरर. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे क्लास एक नया बना रहे हैं ताकि हम लोग बेसिकली इन तीनों फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकें, डिफाइन कर सकें. उसके लिए मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है. वाई इज इट गिविंग मी एन एरर? लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक. यहाँ पे बोल रहा है वी नीड टू इम्प्लीमेंट मेथड्स एंड वी नीड टू मेक आवर ऑडियो ऑल्सो एज एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज you have to first of all define all these methods here. ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइविंग वाला हमने डिफाइन कर दिया. we need to now define what? we need to define entertainment. तो यहाँ पे हमने entertainment डिफाइन कर दिया है, लेट्स से हेलो बोल के. और एक और मेथड डिफाइन करना है तो वो है शो. तो शो मेथड भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी एरर जो है, एरर यहां पे नहीं आ रहा, अब एरर यहां पे आ रहा है. मैंने तो सारा चीज डिफाइन कर दिया ना, फिर भी एरर आ रहा है. व्हाई इज इट? लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक. सो इफ आई क्लिक ऑन इट यू कैन सी इट सेज change extends car to implements car. What is it saying is that you are showing inheritance, that's fine. You are defining all the undefined methods in here, that's fine. But you cannot use extends here. To show inheritance, you have to use here implements. You have to use here implements keyword. अब आप ये समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है. So basically the 10th rule is कि जब भी आप क्लास
से क्लास इनहेरिट करते हो, राइट, जब भी आप क्लास से क्लास इनहेरिट करते हो तो आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। जब भी आप क्लास से इंटरफेस कनेक्ट करते हो तो आप इंप्लीमेंट्स यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप इंटरफेस से क्लास इनहेरिट करते हो तो भी आप इंप्लीमेंट्स ही यूज करते हो, और जब भी आप इंटरफेस से इंटरफेस इनहेरिट करते हो तो आप एक्सटेंड्स यूज करते हो। ये रूल है जो कि वैलिड होता है आपके हर जावा प्रोग्राम में। तो अभी तक हमने हर बार क्लास टू क्लास ही इनहेरिट किया है, तो हर बार हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया। अभी जब मैं इंटरफेस वाले कॉन्सेप्ट्स पे आया, तो इंटरफेस वाले कॉन्सेप्ट पे जब आप इनहेरिट कर रहे हो टू क्लास टू इंटरफेस, तो आप इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। जब आप इंटरफेस टू क्लास करोगे तो भी आप इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करोगे, लेकिन जब आप इंटरफेस टू इंटरफेस इनहेरिट करोगे तो आप एक्सटेंड ही यूज करोगे। मतलब सेम चीजों में एक्सटेंड यूज होगा, डिफरेंट चीजों में इंप्लीमेंट यूज होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस राइट अवे। ठीक है, फाइन। हाय उत्कर्ष, अनवर, after Java 8 interfaces can also have non-abstract methods. Thank you for that. But अभी उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ मैं, इट्स देयर इन माई नेक्स्ट पीपीटी, मतलब जो अभी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है वो। बट अभी अगर मैं सबको बता दूँ ये चीज़ तो भयानक कंफ्यूज हो जाएंगे सबको बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो अभी इसलिए मैं वो चीज़ नहीं ला रहा हूँ। आप और जो लोग पहली बार जावा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, द ऑल स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग जावा फॉर द फर्स्ट टाइम, please do not get confused what Utkarsh has written. Yes, he is right and I am going to explain you that, but please do not argue in that कि अभी तो आपने बोला कि ये नहीं हो सकता तो फिर why Utkarsh is writing that. वो आएगा बाद में, ओके। सो अभी don't give value to that particular comment, okay. इतना समझ में आ गया, फाइन। सो वी हैव टू यूज योर इंप्लीमेंट्स, नाउ देयर इज नो एरर। सो व्हाट वी कैन डू इज वी डू नॉट नीड दिस पर्टिकुलर क्लास, वी कैन यूज दिस ऑडी टू डू एवरीथिंग। सो व्हाट विल डू हियर इज वील यूज ऑडी एंड वी कैन डू दिस एज वेल। तो ये काम करेगा, इट विल वर्क, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेकिन ऑडी का तो बना सकते हैं, और ऑडी का बना के हमने क्या किया, अपना कॉलिंग वॉलिंग कर दिया, ठीक है। सो दिस इज नाउ फाइन। Fine. Now understand. Suppose that this show method is not defined here. पहला क्या होगा, ये हो जाएगा abstract. अब ये अगर abstract हो गया तो ये क्या हो जाएगा, abstract. कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने रूल्स फॉलो किए। मैंने यहां जो पॉइंट्स लिखा है मैंने उसको फॉलो किया। अब मुझे क्या करना है, अभी भी मैं ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लेना पड़ेगा। उस क्लास को मैं नाम दूंगा क्या, ऑडी1। अब यहां पे मैं एक्सटेंड्स लिखूंगा और मैं यहां पे लिख दूंगा ऑडी, और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, अपने क्लास जो मेरा मेथड है जो अनडिफाइंड है उसको मैं यहां पे डिफाइन करूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट हियर पब्लिक, आई विल राइट वॉइड, आई विल राइट शो, आई विल डू दिस, एंड यहाँ पे I'll just write SROOT and hi, ठीक है। I'll do this much, right? I'll just make it 1 and I guess it's fine, so it's working। अब यहाँ पे मैंने extends यूज किया है, क्यों, क्योंकि ये भी क्लास है और ये भी क्लास है, दोनों क्लासों के बीच मैंने इनहेरिटेंस शो किया, so it's going to use extends here, करेक्ट। सो जो चीज़ें डिफाइन नहीं है आपको उसको डिफाइन करना है। अब आप अगला क्लास बनाओ या उसके अगला क्लास बनाओ, दे डोंट केयर, फाइन। इंटरफेस समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड, लेट्स ट्राई टू सी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो वी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या लिखा था, इंटरफेस कैन नॉट हैव अ मेथड डेफिनेशन एक्सेप्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक। सो बेसिकली अ मेथड
cannot have a definition except its default and static. अभी ये सारे मेथड पब्लिक हैं, राइट? तो ये जो बोल रहा है ना कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड लिख सकते हो, मतलब आप यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टैटिक मेथड डिफाइन कर सकते हो, ये फीचर्स आई जावा 8 में। वही चीज उत्कर्ष ने लिखा है कि जावा 8 के बाद जावा डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप इंटरफेस में भी कुछ कुछ मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक मेथड्स को आप डिफाइन कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट मेथड्स को आप डिफाइन कर सकते हो। आई मीन टू से दैट सपोज इफ यू आर राइटिंग हियर void fun, ठीक है? तो यहां देखो कुछ एरर नहीं आ रहा है, इट्स नॉट गिविंग मी एनी एरर। व्हाई? बिकॉज डिफॉल्ट मेथड्स कैन बी डिफाइंड इन एन इंटरफेस, ऑल्सो वी कैन हैव एन स्टैटिक मेथड एज वेल। okay, so we can have these methods in our programs. This feature came in from Java 8. That's what Utkarsh has written, and that's what we'll also see in our next program, so don't worry right now, अब इतना ही समझो, ठीक है? And it is optional to prefix keyword abstract and public in front of method declaration. यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो ये abstract public लिखा हुआ है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है। इवन इफ यू डोंट राइट इट, नथिंग इज गोना हैपन, बिकॉज इन बाय डिफॉल्ट ऑल द इंटरफेसेस, ऑल द इंटरफेसेस विच एवर यू विल क्रिएट, अगर उनके मेथड्स डिफाइन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होती हैं, तो आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट मेंशन दिस, दैट्स इट, फाइन। सो इट इज ऑप्शनल टू प्रीफिक्स कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। आप लिखो मत लिखो, दैट्स ऑन यू। If a class implements an interface, then it has to implement all the methods that are present in the interface. मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है किसी इंटरफेस को, अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है किसी इंटरफेस को, तो उसके सारे मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन होना जरूरी है। अगर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं हो रहा है तो फिर से वही सेम प्रोसेस चलते रहेगा। इंटरफेस कैनॉट हैव डेटा मेंबर्स एक्सेप्ट फाइनल एंड स्टैटिक फील्ड्स बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर। Abstract class can contain constructor. Interfaces cannot contain constructor. We cannot instantiate an interface. That means we cannot create an object of interface. And multiple instance is achieved using interface. अब यही एक लास्ट चीज बाकी है हमारा देखने का कि मल्टीपल इंस्टेंस कैसे अचीव होता है। बट लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन फर्स्ट। इंटरफेस कैनॉट हैव डेटा मेंबर्स। नॉर्मल डेटा मेंबर्स इंटरफेस के अंदर नहीं डाल सकते, मतलब कि इंट आई, इंट जे, फ्लोट जे, ये सब नहीं डाल सकते एक्सेप्ट वो फाइनल या स्टैटिक हो। मीन्स यू कैन हैव सम वेरिएबल्स हियर विच इज स्टैटिक आई, ये सब हो सकती हैं यहाँ पे। व्हाट एरर इज इट गिविंग? मैंने शायद फॉर्मेट ही गलत लिखा है, फॉर्मेट गलत है, बट यू कैन हैव स्टैटिक, यू कैन हैव फाइनल वेरिएबल्स, यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ वेरिएबल्स इन योर इंटरफेसेस। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आएगा, यू विल बी एबल टू सी दैट। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। रिमेंबर मैंने एब्स्ट्रैक्शन में एक फ्लाइएबल का एग्जाम्पल दिया था, सी दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्लाइएबल। तो यहाँ पे क्या था, ये तीनों फंक्शंस डिफाइन नहीं थी, डिक्लेयर्ड थी, और एक फंक्शन था दो जो डिफाइन था, इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, करेक्ट। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो डिफाइन है ना, सारे फंक्शंस यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर्ड है एंड नॉट डिफाइंड। तो ये इंटरफेस हो गया। अब इसको मैंने इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज करके एक नया क्लास बनाया एरोप्लेन, और वो सारे फंक्शंस का यहाँ पे मैंने ये कर दिया, डिफाइन कर दिया, एंड देन वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ एरोप्लेन एंड देन वी हैव कॉल्ड दैट द स्टार्ट मेथड। सो इट्स वर्किंग, ठीक है। इंटरफेस इज सिमिलर टू क्लास, एन इंटरफेस कैन हैव मेथड्स एंड वेरिएबल्स। Interfaces are the blueprint of the class. It specifies what a class must do and not how. An interface is a fully abstract class. An interface is a fully abstract class. यहाँ पे लिख देते हैं, if anybody is noting it down, these points, please note it down. These points are very important. क्या था वो point? An interface is a fully abstract class. An interface is a
fully abstract class. Fine. सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको बहुत अच्छे समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस क्या है, तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगी समझने में कि एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस क्या है. नाउ the methods declared in an interface are by default abstract. The methods declared in an interface are by default abstract. We know that. We know that, right? These all are abstract. Another way to achieve abstraction in Java is with interfaces. मतलब एब्स्ट्रैक्शन को अनदर वे से अचीव करने के लिए इंटरफेसेस है. बहुत कॉमन चीज समझ में आ गया होगा. इंटरफेस इज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड मेथड्स विद एम्प्टी बॉडीज. सेम थिंग. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. कुछ यहां तक समझ में आया? इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, दिस इज अनदर एग्जांपल टू शो यू एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस. ठीक है. उसके बाद हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला चीज देखेंगे एंड देन वी एंड दिस सेशन. फाइन. सो लेट्स ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. सो वी हैव अ, अब ये एग्जांपल ऐसे बनाया गया. ओके. सो व्हाट आई थॉट इज, लेट्स से कि you have a family, right? Obviously you have a family, and then your father comes in and he brings one TV for you. Fine. And in that TV is just a black screen which you can see. Okay. And you can find a start on off button. You can just find in that TV that start on off button. So you know how that start on off button will work. आप on वाला switch बनाओ, दबाओगे तो TV open खुल जाएगा, right? TV चलने लग जाएगा. If off, then TV will switch off. You know that. So in a particular black screen TV, that smart TV, you know that how you can switch and on and off that particular TV. But there are some more buttons, but you do not know how it works. So there is a volume button, there's a thumb scanner, there's a camera. These all things are there, but you do not know how it works. So what are you doing? If your father is saying that, hey, can you create a class for this particular TV? So what you will do? You'll do class television. You know there's a volume, you know there's a thumb scanner, you know there's a camera, but you do not know how to use that. So you're not defining it, you're just declaring it. But you do know how to start on and off. So you defined it. तो ये अब ये क्लास क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया. ठीक है. तो अब आप क्या करो? अब आपके पापा ने बोला कि सी हाफ ऑफ द थिंग्स यू नो, हाफ ऑफ द थिंग्स यू डोंट नो. So now I'm going to tell you that's a smart TV. यहाँ पे इसका वॉल्यूम है, यहाँ पे इसका थंब स्कैनर है और यहाँ पे इसका कैमरा है. Now your father told all of these things to you. So what you will do? You'll create a different class, smart TV. You'll extend it with the television, and you will define all the undefined methods of television class here. क्योंकि आपको पापा ने बता दिया कि वॉल्यूम क्या है, थंब स्कैनर क्या है, कैमरा क्या है, तो आपने सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया. यू हैव डिफाइंड एवरीथिंग नाउ हियर. सो नाउ यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मार्ट टीवी एंड देन यू कैन प्रिंट वॉल्यूम एंड कैमरा. वेरी इजी एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीटली. सेम एग्जाम्पल हम लोग इंटरफेस में देखेंगे. तो बेसिकली फिर से वही स्टोरी नरेट करते हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग. आपके पापा ने फिर से एक टीवी लाया, ब्लैक स्क्रीन, बट अभी उसमें कोई बटन नहीं है. बहुत एडवांस टीवी है, एकदम पतला थीन सा टीवी है, उसके अंदर कोई बटन नहीं है. नो बटन, देयर इज नथिंग, राइट? देयर इज ओनली अ ब्लैक कलर स्क्रीन. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो फोटो फ्रेम है कि टीवी है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टीवी. यू नॉट इवन नो दैट दैट इज टीवी और नॉट. यू आर जस्ट थिंकिंग दैट इट माइट बी अ टीवी. सो स्टार्ट ऑन ऑफ नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता, कैमरा नहीं पता. तो ये क्या हो गया? ये इंटरफेस हो गया. इसको क्लास नहीं बोलेंगे. अब हम एक क्लास बना रहे हैं. जब आपके पापा ने बताया कि एक स्मार्ट टीवी है, इसके अंदर वॉल्यूम होता है, इसके अंदर स्टार्ट ऑन ऑफ होता है, इसके अंदर कम कैमरा होता है, देन यू केम टू नो दैट ओके फाइन. सो नाउ यू डिजाइंड अ क्लास, you have implemented television, and you also defined all the undefined methods of television here. Once you do that, you can now create a object of a smart TV and you can use it. That's what is an interface. कोई doubt इसमें? तो please let me know. What is the reason behind using the interface? It is used to achieve abstraction. It is used to support the functionality of multiple inheritance. देखो main reason multiple inheritance का ही था interface का आने का. Why interface was introduced in Java? Because of multiple inheritance. To make multiple inheritance achievable, interface came into picture. ठीक है? अभी तक भी सस्पेंस है कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसा क्या चीज़ है कि इंटरफेस को कंप्लीट कर सकता है. तो विल सी दैट. बहुत लोग समझ में आ गया होगा बहुत लोगों को कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव हो जाता है इंटरफेस के साथ. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दैट नाउ.
Also, the third reason is it is used to achieve loose coupling. Fine. Any doubts still here? Any doubts still here? Please do let me know. थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करते हैं. So basically, शाम में we have a session where we are doing oops revision, right? If you have seen the playlist, there is one session which is saying oops revision. So in oops revision, we are going to do the same thing. We are going to start from class and object और शुरू से लेके end तक जो भी हमने पढ़ा है, right? Static keyword, this keyword, encapsulation, interface, polymorphism, class and object, constructor, method, inheritance, abstraction, interface, वो सारी चीज़ें we will revise. Encapsulation भी, because encapsulation I have not told you what is it. So encapsulation will be the first topic which we will try to do it in the evening at 8 p.m. Because right now I don't think we'll be able to cover encapsulation in this session. So encapsulation we'll cover it at the evening session. So that will be a oops revision. So do try to come up with any questions if you have. And also what we'll do is we'll do a feedback session. Sam koi, the same session we'll do a feedback session. So I'll be able to ask you some of the questions like how did you like this playlist, or is this fine, how we are doing it. Those feedback sessions will be there. Fine. So try to attend that because आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा. एक ही घंटे का रहेगा, ज़्यादा देर नहीं, because it's a revision session. So ज़्यादा देर का नहीं रहेगा. It will be just for 1 hour. And if you'll have any doubts, please do ask me. Fine. So anything right now here? Any questions? अभी session खत्म नहीं हुआ है. We will go still about 15 minutes more. So if you have anything, please let me know. Otherwise, we'll move to our next part. Yes, questions भी करेंगे. I'll also come up with some programming questions related to oops. मुझे जितना मिलेगा, जितना मिल पाएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस, I'll try to bring that. और वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि फीडबैक सेशन ज़्यादा देर का नहीं होगा, 15 मिनट. मोस्टली ऊप्स रिविजन भी 30 मिनट. सो वी विल हैव टाइम, डोंट वरी. क्वेश्चंस भी करते हैं. पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस समझ में आया यहाँ तक? क्योंकि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला चीज़ है, इंटरफेस ख़त्म नहीं हुआ है. तो प्लीज़ डू लेट मी नो यहाँ पे कोई डाउट है कि नहीं. अगर नहीं है तो लेट्स मूव अहेड. वाई डू वी यूज़ इंटरफेसेस व्हेन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? वेरी फेमस क्वेश्चन इन इंटरव्यू अगेन, कि इंटरफेस कर लेने का जरूरत क्या था जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस था ऑलरेडी. ठाकी? Okay, fine. So the reason is abstract classes may contain non-final variables. Abstract classes may contain non-final variables. It can contain non-final variables. That means we can have variables which is directly written int I, int j. We can have that in our abstract classes. Whereas variables in interfaces are final, public and static. I have told you this in my previous statements here. इंटरफेस कैनॉट हैव डेटा मेंबर्स एक्सेप्ट फाइनल एंड स्टैटिक. सो इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ पब्लिक, फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल्स होती हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर नॉन फाइनल वेरिएबल्स भी हो सकती हैं. दिस वाज द रीजन व्हाई इंटरफेस केम इनटू पिक्चर. ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया. सो प्लीज़ इसका आंसर दिमाग में रखना. इफ इट इज़ आस्क्ड देन प्लीज़ डू लेट मी नो. ब्रो, देयर इज न्यूज़ दैट दिस चैनल इज गोना शट डाउन. इज दैट ट्रू? This news is not official, but it's just I don't know how it got leaked. It's just that this channel will get paused. Okay, no videos will be there upcoming by from Feb, but no videos will also get deleted. Channel will be existing and it will have all the videos also. Okay, so don't worry about that. What is loose coupling? So loose coupling थोड़ा hard term है technical language में. लेट्स नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट राइट हियर, क्योंकि ये थोड़ा टफ है. अभी समझाऊंगा तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. विल ट्राई टू सी विथ अदर एग्जाम्पल. अभी आई डोंट वांट टू गेट इनसाइड इट. मे बी टुमारो विल ट्राई टू सी, बिकॉज अभी कोई एग्जाम्पल आ नहीं रहा है. एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग. सो अभी नहीं, मे बी टुमारो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. ओके, विद अ बेटर एग्जाम्पल. अभी ऐसे डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा, समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम होगा. सो लेट गिव मी सम टाइम. I'll come up with a better explanation of this. That's why I did not explain it clearly. मैंने बस ये पढ़ा और फिर छोड़ दिया, क्योंकि बेकार में भी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं. इसको एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं कर पाऊंगा and you will be able to get confused. That's why just leave it right now.
Loose coupling we'll try to see it in a next class. वो एक अलग टॉपिक है, we'll try to see that. इंटरफेस सिंटैक्स, तो ये कुछ सिंटैक्स हैं, वी ऑलरेडी नो दिस बट देयर इज समथिंग न्यू हियर. सो इंटरफेस लिखते हैं, फिर इंटरफेस का नाम लिखते हैं, फिर जो मेथड्स होता है वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि ये सिर्फ डिक्लेयर होता है, डिफाइन नहीं होता है. और जो फील्ड्स होती हैं वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होती हैं. अगर यही ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता तो इसके अंदर जो मेथड्स होती वो या तो एब्स्ट्रैक्ट हो भी सकती थी या तो नहीं भी हो सकती थी, और जो फील्ड्स होती वो नॉन फाइनल भी हो सकती थी. ठीक है, तो यही अंतर है इन दोनों में. अब जब जावा 8 आया तो जावा 8 ने बोला कि आप इंटरफेसेस के अंदर कॉन्क्रीट मेथड डाल सकते हो, लेकिन कॉन्क्रीट मेथड जो आप लिखोगे, कॉन्क्रीट मेथड मतलब जो मेथड जो आप डिफाइन कर सकते हैं, तो वी कैन यूज द मेथड्स विच आर डिफाइंड, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट दैट इज डिफॉल्ट मेथड और इट्स एन स्टैटिक मेथड. आप दोनों तरीके के मेथड को यूज कर सकते हो अपने इंटरफेस के प्रोग्राम में, अपने इंटरफेस के अंदर. ओके, बट दोज मेथड शुड नॉट बी पब्लिक, दोज मेथड शुड बी ओनली डिफॉल्ट एंड स्टैटिक. ठीक है, तो कॉन्क्रीट मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं जावा 8 से, बट वो डिफॉल्ट और स्टैटिक होना चाहिए. ठीक है, नाउ प्राइवेट मेथड्स ऑल्सो वी कैन नाउ हैव, प्राइवेट मेथड्स भी हम लोग डाल सकते हैं. जावा 9 में ये दिया गया, जावा 9 में इसने बोला गया कि हम लोग प्राइवेट मेथड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी जावा पढ़ा, अभी तक जो भी हमने आपको जावा बताया, वो हमने आपको बताया जावा 7 या 6 तक. अब हम लोग समझेंगे कि जावा 8 और 9 में क्या डाला गया. तो सी बेसिक चेंजेस जो मॉडिफाई हुआ था जावा में वो जावा 8 से हुआ. लैम्डा एक्सप्रेशन, ये बहुत सारे ऐसे नई टॉपिक्स आई जावा में जो जावा 8 के बाद ही आया, राइट. तो पूरा पूरा चेंज हो गया जावा. सो एंड दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आप उसको शुरू से स्टार्ट करो, फिर उसके अंदर कौन से अपडेट आए वो देखो. दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व हुआ है, राइट. तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें यहाँ पे क्यों आई, करेक्ट. तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक ये टॉपिक्स क्यों आया गया वहाँ पे. हाय मोनिका सर, प्लीज टीच इन इंग्लिश. I was using English at the first time when I started the complete Java tutorial. But I seem to know that all my candidates are from North and they have this Hindi thing. So started telling it in Hindi. But we have some more students who wants in English. So yeah, fine. I will take it in English, no problem. If in interface we can also have a default concrete method, then why we can't have a constructor in interface? We'll see now. We'll see why we can't have and whether we can have or not. We'll see that. How can we connect with you for guidance in future if this channel is paused? Lucifer, you can connect with me in LinkedIn. I cannot share the LinkedIn profile with you in my live chat, but please go ahead and search it in LinkedIn. You will get it. Many of you guys are already connected with me in LinkedIn. So please do ping me in LinkedIn and I'll be able to reply you always. Are the things taught by you sufficient to crack Java problems asked in interviews? Sagar, don't you think these are the main concept questions which is asked in Java interviews? See, mostly मेरे हिसाब से बिगनर लेवल पे, जब आप बिगनर लेवल पे होते हो, जब आप कॉलेज से निकलते हो और पहला आपका कंपनी होता है TCS या इन्फोसिस या विप्रो या ऐसा कुछ, तो नॉर्मल यही सब पूछा जाता है जावा के अंदर. ठीक है, वो डायरेक्टली आपसे DSA वैसे करने नहीं बोलेंगे. ये DSA जो पूरा चीज़ है, ये दिस इज CP DSA, दिस इज बेसिकली फॉर फैंग कंपनीज एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, बिकॉज दे नीड algorithmic और लॉजिकल पीपल. ठीक है, गेटिंग इन टू एन MNC, these are the things which they normally ask. Java पढ़ने पे when you are doing when you are researching on Java, when you are learning Java, these are the main things which you should be knowing, right? Because आप जब कुछ डेवलप करोगे तो ये सारे फंडामेंटल्स आपको आनी चाहिए जब आप जावा करोगे, राइट. सो इफ़ यू आर going into a MNC company or you're giving interviews for MNC company or any kind of company, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जावा में. बेसिक क्वेश्चंस बिगिनर को, अगर आप एक्सपीरियंस हो ये नहीं पूछा जाएगा. अगर आपने पहली जावा में काम कर चुका है तो आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपको इंटरनली कोडिंग में जाके पूछा जाएगा क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप 2022 पास आउट हो या 2021 पास आउट हो या 2023 में पास आउट हो रहे हो, तो आपको ये सारी क्वेश्चंस पूछी जाएंगी डायरेक्टली.
ठीक है, मेरे को पूछा गया था सेम थिंग्स, इसीलिए मुझे इतने अच्छे से ये सब चीज़ें याद हैं. When the questions have been asked to me, that was basically the, it was looking like it was most hard question, but मैंने जब research किया, when I researched about it, then I got to know that okay fine, this is how it happens. So same thing, अगर आपको भी कुछ new question पूछा जाए, whenever something new is going to get asked to you, if you're not being able to answer it, go home back and then research about it. मे बी उसमें उस कंपनी में हो या ना हो, दैट्स फाइन. देर आर लैक्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, सो इट्स टोटली फाइन इफ यू गेटिंग रिजेक्टेड, बट learn from that rejection. That's what is very important. Now let's go ahead with this particular syntax. So void show, that's a public abstract void show. Okay, so it's because in interface already all the methods are public and abstract. We have written int a20, so this is a public static final int a20. Okay, this particular variable is a by default public static and final. We have written a display method, but we need to make sure that this is default. We are making a run method, we need to make sure that this is static, and we have also written a stop method, but we need to make sure that this is private. Okay, so this is a normal basic syntax, or you can say a program example for interface. Now let's have a look at the default example. जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि इसका कैसे, अगर डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड लिख रहे हैं तो कैसे कंस्ट्रक्टर बन रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग. लेट्स हैव अ लुक. सो नाउ हैव अ लुक एट दिस interface place void live. Void live is nothing but an abstract class, a public abstract, not class, method, public abstract method. So and it is also having a default message, which you can see default method, right? So it is printing this is the default method, right? And then class Jharkhand implements place. So class Jharkhand is nothing but a child class in which I am actually defining the undefined method of place interface, which is live. So I'm just defining that, and then I'm creating a Jharkhand ka object, and I'm using that object to call the live end message. So let me do one thing. What I'm going to do here is I'm going to just take this particular example and I'll put it in my program. Just 1 second. So ये कमेंट्स नहीं हटा रहा हूँ मैं. इफ एनीबडी वांट्स टू राइट दीज 14 कमेंट्स, यू कैन प्लीज राइट इट डाउन. दोज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So I'm going to just write this here, and I'm going to make this as main. Okay, so you can see no error, and if I run this particular thing, you can have a look. It is giving me living in Jharkhand, and then this is the default method. So basically first live message is getting called, and then the message getting is called, right? Now let's have a look. So what I'm going to do here is, let's say I'm going to create here place. ठीक है, so place p equal to new place. Can you see that, right? 1 second, this is disturbing. Right, p dot message. I hope you can see my screen. Okay, now you can see here it is giving me an error. That means it is saying that you cannot create an object of place, right? So even if we have made our place as interface, we know that we cannot create an object of our place. Instead we have a default void message. Still we cannot create the constructor of place. That means we cannot create an object of our place. Now please understand, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ place constructor, ठीक है, और मैं यहाँ पे system.out.println कर रहा हूँ. Let's say I'm giving here hello, ठीक है. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे error आ रहा है, right? Why is it coming as an error? Let's try to find out. So if I click on it, it says remove constructor. It says convert to class. ठीक है, मतलब कि मैं अभी भी इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता हूं. We cannot create a constructor of an interface. If we cannot create a constructor of an interface, we cannot create the object out of it. ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करने का दूसरा चीज क्या है? दूसरा रीजन ये है कि आप कंस्ट्रक्टर पहले चेक करो. तो यस, वी कैनॉट क्रिएट द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस. सो नाउ
Why is it so? Because when a constructor is created, constructor will be looking into the message and it will also look at this information, right? उसको सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, बट उसके पास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, लिव का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वही तो मैंने आपको बताया ना कि कंस्ट्रक्टर पहले जब बनता है तो उसका पहला काम होता है आपके वेरिएबल्स और आपके मेथड्स को इनिशियलाइज करना। वो चेक करेगा कि आपके सारे डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज होने लायक हैं या नहीं। अगर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो वो इनिशियलाइज हो सकती हैं, बट जब उसको पता चलेगा, कंस्ट्रक्टर को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियलाइज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं इनिशियलाइज हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे नहीं बन सकता, राइट? So that's what is happening here. For live we cannot create a constructor for this reason, and that's why we cannot create an object. Fine. Concrete method होने से नहीं होता है, concrete method नहीं है अगर, तो कंस्ट्रक्टर का नामो निशान नहीं होगा। ओके, एब्स्ट्रैक्शन में भी सेम था, कंस्ट्रक्टर नहीं है, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, fine. So now let's have a look at our static example. So this is an static method which you can see area, static int area, and we are just calling it. And because this, see, you can see here that this is static, right? So have a look at here how I'm calling area. You can see system.out.println place.area, क्योंकि static methods को हम लोग नहीं स्टैटिक मेथड्स को हम लोग इससे नहीं रिटर्न कर सकते ना, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप स्टैटिक चीज़ को कॉल नहीं कर सकते हो। स्टैटिक कीवर्ड में मैंने आपको ये पढ़ाया था दैट यू कैन नॉट कॉल स्टैटिक मेथड्स यूजिंग अ ऑब्जेक्ट, यू हैव टू, वो सीधा क्लास का होता है। तो आप प्लेस यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। इसको भी एक बार रन करते हैं। So this is my code here, and I'm just going to make it something like this. Fine. So interface place void live, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। Then there is static here, same thing is happening. Place p equal to new Jharkhand, p dot live, so it's gonna print here living in Jharkhand, and then system dot to println place dot area, उसके साथ एक वैल्यू है जो कि x है, तो 43 इंटू 43 इंटू 43, दैट्स व्हाट इज गोना गेट यू प्रिंटेड। क्यों हम लोग उसको प्लेस डॉट एरिया के साथ कॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेथड है वो एक स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड्स को हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते, इनफैक्ट कभी नहीं कर सकते। वी हैव टू ऑलवेज यूज स्टैटिक मेथड्स विथ आवर क्लास। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। आई होप दिस मेक्स सेंस। नेक्स्ट, so these are the interface rules. Like abstract classes, interface cannot be used to create objects. A class extends another class, an interface extends another interface, but a class implements an interface, or an interface also implements an class. Interface methods do not have a body. The body is provided in the implemented class. Interface methods are by default abstract and public. Interface fields are by default public, static, and final. On achieving inheritance on an interface, you must override all of its method in the class. That means आप सारे methods को inherited class में define करना होगा आपको. An interface cannot contain a constructor as it cannot be used to create objects. Fine. किसी ने एक डाउट पूछा था, सर कैन वी राइट रिटर्न स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर? नहीं, मेथड्स रिटर्न होती हैं, मेथड्स आप हमेशा रिटर्न करते हो। सी, रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर मेथड से कुछ चीज़ें चाहिए। कंस्ट्रक्टर से मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, मेथड से हमेशा मुझे कोई रिजल्ट चाहिए, राइट? ये भी मैंने आपको पहले वाले सेशंस में बताया है। आई हैव एक्सप्लेन यू दिस इन माय प्रीवियस सेशन एज वेल। बिकॉज मेथड्स इज ऑलवेज वर्किंग, it's a logical code, so it has to return something. That's why we mentioned their void or int or string, public void, we mentioned that. But in constructor we never do that. Constructors we directly write it ना, हम लोग यहाँ पे constructor अगर बनाते हैं तो इसको directly लिखते हैं।
डायरेक्ट लिखते हैं ना, यहाँ void लिखते हैं क्या, int लिखते हैं क्या, नहीं ना, तो ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ, it can't return anything. Okay, fine. Now interface examples. So सेम थिंग, टेलीविजन स्टार्ट ऑन ऑफ वॉल्यूम कैमरा, ये मैंने आपको साथ बता चुका है एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल्स रिपीट हो गए हैं. यू हैव अ लुक एट दिस वन, प्लेस. इसके अंदर इंटरफेस है, तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इट्स नॉट डिफाइंड. वी हैव टेकन झारखंड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड प्लेस विद इट, सो वी हैव अगेन डिफाइंड दिस, दैट्स फाइन. We have another class which is Uttar Pradesh, which is implementing place. So here also we need to define it. तो मेक श्योर कि आप जो भी क्लास नया बना रहे हो, अगर वो इनहेरिटेंस शो कर रहा है इंटरफेस के साथ, यू नीड टू डिफाइन दैट थिंग, यू नीड टू डिफाइन द ओवररिडन मेथड देयर. ठीक है, एंड देन यू कैन सी दिस एग्जांपल क्लियरली. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. सो कैन वी मूव अहेड एंड कम टू मल्टीपल इंटेंस वाला कॉन्सेप्ट, व्हाई मल्टीपल इंटेंस इज नॉट अचीवेबल. सो मल्टीपल इंटेंस में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, दैट वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज इनहेरिटिंग फ्रॉम टू थिंग्स. So one particular child, one particular son class is inheriting from father and mother. Only 2 minutes, Tanuj. Just 2 minutes. I'm in the last topic. We are going to complete this session in 2 minutes. Normally session 1.5 hours का होता है, but this one is going too long because I was having too many things to explain. Just 2 minutes. So that's why I'm moving fast. This is a class son which is inheriting property from father and mother, right? So class son is inheriting property from father and mother, both of them. So if you are writing a code, father is having name method, mother is having a name method. So basically it is an overridden, right? It's basically showing method overriding, right? So if I'm creating an object of son, if I'm writing class son extends father comma mother, that means son is inheriting property from father also and mother also. And if I'm creating an object of son and if I'm writing s.name, now s.name कहाँ जाएगा, whether it will go to mother's name or father's name, we do not know, right? So that's an ambiguity, that's a problem which we have created, right? So if it goes to name of mother, then father will be saying that why you didn't came here, and if you go to fathers, then mother will say why you didn't came up here, right? So this is the problem which is happening here, right? That's why we say that multiple inheritance is not achievable in Java through classes. Through classes, multiple inheritance is possible in Java, but not through classes, through interface. अब इसको अगर मैं interface में लिखूं तो कैसे लिखेगा ऐसा? Interface father, void name. Now we know that if my father class is an interface, that means we cannot define our method. So we have just declared it. And mother class may be same thing. If my mother class is an interface, we cannot define the name method. We have to just declare it. So name method declare कहाँ होगा? एक ही जगह बचा, which is son. Why son? Because I've told you, if any particular method is not defined, we need to define it in our inherited class. So we write class son. We write class son implements father comma mother, and then what is happening? Class son implements father comma mother. So it is showing inheritance property with it. And what does the rule say? The rules say that you have to define the method which is not defined in the above interfaces. So we are just defining it. We are just doing what our rules say. So we are just doing that. And then public static void main son is equal to new son s.name. Right? So we got our output. Why? Because this will not create ambiguity. This will directly go to this function, which is name function, and we'll get the output. So same method void name is used here, but it's because in interface, so we do not have to define here. We need to define it only in this place. That's why it is called that multiple instance is achievable through interface in Java, not through classes in Java. So if any interviewer is asking you that, hey, how many types of inheritance is there? You will say 5 types of inheritance is there. Then he will ask you which inheritance is not possible in Java. You will say there is no inheritance. There's no types of inheritance which is not achievable in Java. Every type of inheritance is achievable in Java. It's just that multiple inheritance is achievable through interface and not class. Okay? So this was all about the session. I hope you got it. Hi, Lucifer. Research analyst is great learning. You are the one, right? Yes, I'm the one. You can check out those videos as well if you want.
Can we use virtual function? What's virtual function? What do you mean by virtual function? Will this series cover Spring Framework also? No, it will not cover Spring Framework. It will cover the core and advanced part of it. Spring Framework is a framework of Java, so we are not completing that here. This is the ending of this session. So please join the Telegram channel so that you get notifications about all my sessions in Telegram channel. The link is given in the description. So please go ahead and watch it. Sorry, join it so that you get to know when I'm coming and when I'm not coming. Also, please do subscribe to the YouTube channel, which is CodeBeyond, so that you can get the notifications in your YouTube app as well. And also, please do like and share so that more and more number of people will get to know about this. That is used in C++ only, Manish. Virtual function, we cannot use it here. It will not work. Yes, I'll accept it, Trilok. I will accept it. Fine. So I'll see you soon, guys. I'll see you at 8 p.m. today itself. We'll revise something. That session will not be big, not as this much, because that will be just a revision and kind of a programming concepts thing. So I'll see you soon at 8 p.m. Bye-bye. Take care.